Then he was the director of IB and all. But you know, he has a very special love for Tajul because डॉक्टर साहब जब मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, तो उन्होंने आईपीएस का बैज इनको उन्होंने लगाया था। पासिंग आउट पीरियड में वो गेस्ट ऑफ बस बस हो गया ना। अरे हाउ आर यू नगर के लोग आए। हाउ आर यू। Last time आपने कुछ कहा था that you would be visiting the year before summer में job. I was in New York at the time. He lived many years in America. He got business in Delhi, in California, in Milan, in Italy. Hello. हेलो भाई कुछ नहीं। तो आ ही जाता है। अच्छा है। Hey Vijay, how are you? Yeah. How are you? 8:15 बजे की ट्रेन हम लूँगा ये बताइए। चलिए 8:15 बजे छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ दूँगा। चलिए आइए। अरे चलिए चलिए। हाँ नमस्कार। ये अपने मंदसौर का है। मिला ही नहीं रहे, उनसे मिला रहे जिसे मतलब ही नहीं मंदसौर से, हमारा मतलब है एक मिनट भैया योगेश he is a great support to us, the man behind. मैडम आई। गुड इवनिंग। आप सबका आज इस बड़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी जो मैंने ग्रामोफोन बजाया ये हमारे वालिद साहब ने 80 साल पहले लिया था, जब इसको तवे वाला बाजा कहते थे और पूरा मोहल्ला और पूरा गांव देखने आता था कि एक तवे में से आवाज़ आती है। तो जब उनकी 100वीं जन्मदिन मनाने की हमने सोची तो हमने कहा इस तवे वाले बाजे से ही कुछ कनेक्टेड बात की जाए। उस तवे वाले बाजे के गाने वाले नैनन कोशी को हमने आज दावत दी है। या आप हमारे बीच में हैं, आपको लगेगा आंख मीच लेंगे तो लगेगा के एल सहगल अभी जिंदा हैं, पंकज मलिक भी हैं। तो दिस इज हाउ वी हैव असेंबल्ड हियर टू पे ट्रिब्यूट टू माय रियल डियर फादर श्री एल भल्ला। दैट इज हिज बर्थ सेंटेनरी टुडे एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग फॉर दिस प्रोग्राम। सिर्फ 5 या 10 मिनट थोड़ा सा फॉर्मल हम लोग करेंगे, देन यू एंड नैनन कोशी विल बी देयर। बट बिफोर दैट आई मस्ट रीड ए स्मॉल पीस इन मेमोरी ऑफ माय फादर। दूर जाकर भी उनसे दूर जा न सके, कितना रोए कि किसी को बता न सके। गम ये नहीं कि वो मिल न सके, दर्द सिर्फ इतना है कि उनको भुला न सके।
this is how you all who have lost their fathers can understand this pain. And I'm very grateful to the very senior people here sitting here who appreciated this effort, because this could be just a guidance to the young crowd, the young people, कि अपने बुजुर्गों को याद रखना चाहिए, अपने बुजुर्गों को याद करने में कितना मजा है. Let them also see this. Now, since we are all associated with a small princely town of Madhya Pradesh, Javra, and we have the celebrity Javraite with us, that is Justice Markandeya Katju. We have requested him to be the chief guest today to please come और एक लाइट जलाएं और दिया जलाएं और हमारे पिताजी की याद में इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. डॉक्टर कुसुम से मैं गुजारिश करूंगा कि जस्टिस काटजू को और विवेक तनखा साहब मध्य प्रदेश फाउंडेशन के हमारे प्रेसिडेंट हमारे बीच में हैं, दोनों को स्टेज पर लाएं और हमारे कार्यक्रम की शुरुआत से पहले फ्लावर्स से उनका स्वागत करें. जुल्फी फ्लावर्स Fine, thank you. Requesting His Lordship Justice Katju to please come and say a few words about his and our family's association with this small princely town of Javra. And Vivek Bhai to also please come. Hi, just a minute. Friends, Dr. Allah's family and my family have a very strong bond. That is that we are both from Javra. My ancestors had no doubt migrated from Kashmir about 200 years back, but they got service in the court of the Nawab of Javra, and Dr. Bhalla's family also served in Javra. So we are Javraites for several generations, and we can never forget that we have eaten the salt of Javra. Javra का एहसान हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं, और इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई जो डॉक्टर भल्ला ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया. उनके पूज्य पिताजी के स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है. उनको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही सफल होगा. शुक्रिया. Vivek Bhai, the president of Madhya Pradesh Foundation, to say a few words, and then we start the program. मित्रों, आज एक बहुत ही भावुक क्षण है. हमारे हरीश भाई जो सबकी स्मृतियों में कार्यक्रम करते हैं, काटजू साहब के ग्रैंडफादर की स्मृति में करते हैं, मेरे फादर इन लॉ की स्मृति में करते हैं, और भी स्मृतियों में करते हैं. आज पहली बार हम उनके पिता की स्मृति में एक सुंदर कार्यक्रम में मौजूद हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, उनसे कनेक्टेड यादों को लाके इट्स रियली वेरी गुड. डॉक्टर साहब, आपकी इन अच्छाइयों को देख के आप एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हो रहे हैं इस शहर में. किस तरह आप अपने यहाँ के बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देते हैं, खाली अपने परिवार के नहीं पर दूसरे परिवार के लिए. वी आर वेरी ग्रेटफुल and I'm sure this is going to be a very, very good, enjoyable evening. Thank you. Mehak to say a few words about my father, and then Kushi Naiman. Please. Good evening, ladies and gentlemen. Mr. A.L. Bhalla was born in Peshawar on the 12th of March 2000. 12th of March, I'm sorry. He belonged to the village Shadiwal in district Gujarat, which is now in Pakistan.
He had his education in the Government College Lahore, where he did his master's in chemistry. He was a pioneer sugar technologist trained by his professor Dr. Shanti Swaroop Bhatnagar, and he established many sugar mills in India. One sugar mill he established was in the Javra district, Ratlam, in Madhya Pradesh, where he settled and became a part of Javra, Malwa, and Madhya Pradesh forever. Bhallas of Javra Charitable Trust today pays musical tribute to his great, noble, honest soul and pledges to carry on his ideals and visions ahead. The trust will every year organize a program like this in the memory of Shri Bhalla, who was a great music connoisseur and will honor an artist like today. We are honoring Mr. Niran Koshi for his services in preserving the golden voices of 40s and 50s. Niran Koshi is a bridge and highway engineer by profession. He joined the Central Engineering Services Roads in the Ministry of Road Transportation and Highways, Government of India in 1959, where he worked in the various capacities before retiring as Director General Road Development and Additional Secretary to the Government of India. Being gifted with a rich voice, Niran Koshi started singing, especially the songs of Shri K.L. Sehgal, Pankaj Malik and others at a very early age. He has undergone training in Hindustani classical music for a number of years at the Gandharv Mahavidyalaya, New Delhi. He is also an acclaimed exponent of Rabindra Sangeet. Over the years, he has given public recitals of songs of K.L. Sehgal and others in many cities of India. With him on tabla is Tulsi ji, violin Sajad Zahoor, on guitar Prasenjit Sarkar, and on keyboard Kamal Dutt Joshi. Now you and Koshi Nainan and our audience, thank you very much for being with us. Thank you. Afzal Sahab, sorry. I sing Gair Filmi Gane. This used to be a genre of Hindustani music which was prevalent and flourishing in the 1940s, 50s, up to say early 60s. Then it faded out, and unfortunately and sadly it is not heard anymore. But in those days, all the great singers, the Gair Filmi Geet, or Gair Filmi bhajans and ghazals, were sung by all the famous singers of those days. But as I said, they are all gone. So, but some of the songs are still heard and appreciated by people of this generation also. I have put together a string of such songs, and of course there is an element of personal choice in the songs which I have selected. You may have heard many of them, or you may not have heard some of them, but I hope you will enjoy listening to all of them. Now, before I start this recital, I would like to present a traditional bhajan, which is known to most people and sung in different tunes. This particular tune, based on the Rag Hamir, was composed by Pandit Vinay Chandra Moudgalya in 1960, when I first came to Delhi. It was my privilege and great good fortune to study classical music for some years in Gandharva Mahavidyalaya under Pandit Vinay Chandra Moudgalya, Bhaiji, as he was known to thousands of his students. Now it gives me great pleasure to present this bhajan, which I learned from the great man himself. Ramchandra Kripalu Bhajavan Harana Bhava Bhayadarunam Navakanjalochana Kanjamukhakar Kanjapada Kanjarunam Sri Ramchandra Kripalu Bhajavan Harana Bhava Bhayadarunam Navakanjalochana Kanjamukhakar Kanjapada Kanjarunam
कन्दर्पयगणित अमित छविनव नीलनीरज सुन्दरं कन्दर्पयगणित अमित छविनव नीलनीरज सुन्दरं पटपीतमानव तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतामरं पटपीतमानव तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतामरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन अर्णभव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणम् भज दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं भज दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दयानन्द नन्द कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनं रघुनन्दयानन्द नन्द कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन अर्णभव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनोरञ्जनम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनोरञ्जनम् मम हृदय कुञ्ज निवास करु कामादि कलदल गञ्जनम् मम हृदय कुञ्ज निवास करु कामादि कलदल गञ्जनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन अर्णभव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं श्रीराम। It is arranged in such a way that I will sing one song of each of the great singers of that era in the first half of the program, and after a short break I will then present many more songs of the same singers. I start with the songs of the two great musical icons of that era, that is K.L. Saigal and Pankaj Malik. K.L. Saigal's most famous songs were all from his films, and there are very few non-film songs. Of course, he sang more than 30 ghazals in his own unique style. The two of those ghazals I'll sing for you later in the program. Panchi Kahe Hot Udas. Panchi काहे होत उदास पंछी काहे होत उदास तू तोड़ना मन की आस पंछी तोड़ना मन की आस पंछी काहे होत उदास पंछी काहे होत उदास देख घटाए आई है
घटाए आई है वो एक संदेशा लाई है वो देख घटाए आई है वो एक संदेशा लाई है वो पिंजरा लेकर उड़ जा पंछी पिंजरा लेकर उड़ जा पंछी जा साजन के पास पंछी काहे होत उदास पंछी काहे होत उदास यार उठ कर आग लगा दे उठ कर आग लगा दे फूंक दे पिंजरा पंख जला दे फूंक दे पिंजरा पंख जला दे उठ कर आग लगा दे उठ कर आग लगा दे फूंक दे पिंजरा पंख जला दे फूंक दे पिंजरा पंख जला दे राख बगुला बन कर पंछी राख बगुला बन कर तेरी पहुँचे उनके पास पंछी काहे होत उदास पंछी काहे होत उदास. Because it's too famous to say anything. I don't have to say anything. All of you must be knowing. This song, this bhajan, was recorded in 1951, and after that he has not sung. This was probably one of the last songs in Hindi. After that he used to sing only Rabindra Sangeet. This is Tere Mandir.
Jaganmoy Mitra. But while singing Hindi songs, he used the name Jagmohan. He was born in 1920 and was very famous in Bengal, and especially singing these Gair Filmi Geet. A number of songs he recorded, and he became very popular throughout India, his Gair Filmi Geets. This one is, the first one which he got all India fame was, Ye na bata sakunga main, dil ko hai tumse pyar kyun. दिल को है तुमसे दिल को है तुमसे प्यार क्यों ये न बता सकूंगा मैं, ये न बता सकूंगा मैं, दिल को है तुमसे प्यार क्यों पहली मिलन के छाँव में तुमसे तुम्हारी गाँव में आँखें घूमी थी चार क्यों ये न बता सकूंगा